friends, first of all, thank you so much, Dr. Ranjan, for inviting me here today. And I'm really excited about being here. So today's topic is actually spiritual quotient. जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक भागफल. What is spiritual quotient and how do we develop this is actually what is the topic today. So the content or the way I'm going to proceed today, there are 8 different topics that I have taken. One is called the triangle of life. Second is the 3 aspects of spirituality that we have to understand. The difference between IQ, EQ and SQ. ये terms को मैं explain करूंगी. The 4th is very important to understand जीवात्मा versus परमात्मा. Because spiritual quotient का मतलब है कि मुझे अपना आध्यात्मिक भागफल बढ़ाना है, जिसके लिए कि मुझे जीवात्मा से परमात्मा की तरफ की जर्नी को किस तरह से मैं सार्थक बना सकती हूँ. That is actually the journey that we take to increasing the SQ. Then I'm going to share with you the SQ ladder. What do you mean by this? 6th is developing your SQ. कैसे हम इस SQ को spiritual quotient को develop कर सकते हैं. 7th है मन और साधना. एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि साधना के बिना SQ develop करना नामुमकिन है. And the 8th is wisdom from the ईशावास्य उपनिषद. जिनको नहीं पता, ये मैं कहना चाहती हूँ कि ईशावास्य उपनिषद में आपको बताया गया है in about 18 verses किस तरह से आप SQ को develop कर सकते हैं. So I thought a little bit of Eastern psychology is extremely important for us to understand SQ. ये हमारे ग्रंथों में already है, but as we know Western psychology ने इस चीज को अलग तरीके से present किया है. So a lot of you who are interested in Western psychology, आपको ये जानने के लिए I'm just giving you some information that one of the books that actually pioneered this term, spiritual quotient, is a book called SQ, Connecting with Our Spiritual Intelligence. ये किताब है, which is written by Ian Marshall. आप ये किताब खरीद सकते हैं और SQ के बारे में उनकी जो thoughts है, वो आप definitely read कर सकते हैं. SQ generally is the most fundamental intelligence, जैसे Ian Marshall ने बोला हुआ है. It is what we use to develop our capacity for meaning, vision, and value. It also allows us to use or develop our capacity to dream and to strive for better things in life. It also underlines things we believe in and the role our beliefs and values play in the actions that we take. इसका मतलब है belief और action, कर्म. इसको हमें साथ में जुड़ना है associated with value. आप किस चीज के ऊपर ज्यादा महत्व रखते हैं या value रखते हैं. Now, if your SQ is developed, they say that your potential for better and more satisfying lives can be fulfilled. इसको आगे लेके गए थे a psychologist called Daniel Goleman, जिसने कि हमें EQ माने इमोशनल क्वोशंट इस शब्द के बारे में इंट्रोड्यूस किया था. And he said he added 2-3 things, which is responsibility and humility. He says responsibility and humility can bring about happiness. And he spoke about what we call inner growth and being. He's the person who spoke about inner being. And all this you can read on the internet, so I don't want to go there today. Let us understand how SQ, one spiritual quotient, can be understood by Hindu scriptures. It's very, very interesting. जब मुझे ये टॉपिक मैंने चूज किया था, तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए और मुझे ये ईस्टर्न और वेस्टर्न साइकोलॉजी के बीच में जो ब्रिज है, जो शायद हम भूल गए हैं, इस ब्रिज के ऊपर आई वांट दैट वी शुड वॉक. Let me make you understand the 3 levels of intelligence. जो terms मैंने अभी use किए हैं, SQ, EQ, and another term that we use is IQ. अब IQ क्या है? It's called mental intelligence. इसके ऊपर हम टेस्ट भी करते हैं. Being a psychologist,
I've done a lot, thousands of children और adults की मैंने testing की है, IQ test जिसको हम बोलते हैं. And I found over the years that IQ test जो है वो बहुत ही basic rudimentary test है. और मैं इतना महत्व देती नहीं हूँ इन टेस्ट के ऊपर, बिकॉज इतने सारे टेस्टिंग करने के बाद मुझे पता चला है कि जब तक इट इज अ टेस्ट जो है ये बेसिकली टाइम बाउंड टेस्ट होती है. माने इतने टाइम में आपको ये टेस्ट या सब टेस्ट जो होती है वो आपको करनी होती है. Now if the child is not in a good mood, that she's had a bad day, maybe the result will not be that good. So a lot of factors go into creating an IQ test and to get an IQ result. And that is why I put it at the lower end of the ladder. What I think, what you think is influenced by so many factors, right? There could be practice effect, there could be emotions, there could be disturbing thoughts, there could be some disturbance in your body on that day. So mental intelligence, or what I think, is influenced by many factors. And one of the factors influencing it is EQ, what I feel. So emotionally, if the child is not in a great mood, you think that the child will be able to perform well on a test which is testing one's mental intelligence? Not really. And that is why IQ comes at the lower end of the ladder. Then we have EQ. So what you feel is really very, very important, right? Because if I feel for something, I want to do this. I have a feeling that becoming a singer or a painter or something is something that, makes me feel good. I'm sure I can do it. There are many famous people that we know who were not very good students in school, but somehow they've excelled because what they felt is what they went with. So EQ is really very important also. But beyond this is who I am or what I am, right? If you believe in who you are, that you are an empowered, wonderful, powerful, happy person, whether your IQ is 90, 100 or 110, it does not really matter, because you have connected to actually what you are. And that is what we call spiritual intelligence. So let us understand more about spiritual intelligence. Now, the journey takes a person to raise his mental intelligence, raise his IQ, comprehend his faults and flaws, failures, and then moves this intelligence to cope with his emotional engagements with other people. जब तक आप emotionally किसी के साथ engage नहीं करते, तब तक आप इस particular, kind of journey called life, इसके साथ जुड़ नहीं सकते. So emotional engagement is extremely important. Second. And third, as this journey of life continues towards a purpose, you begin to ask the fundamental question, who am I? And this will lead a person to a quest, जिसको कहते हैं Krishna, into his own self. So what Daniel Goleman said about inner work or inner being is actually what he termed SQ. Now, I'm going to show you a video because I work with children also. मैं बच्चों के साथ भी काम करती हूँ. I'm attached to a school in Bombay, ICSE school है, जिसके साथ मैं 10 साल से I've been attached. And my life actually began with children, okay? Differently able बच्चों के साथ मैंने बहुत काम किया है. 30 साल मैंने काम किया है. और इस स्कूल के अंदर मैं बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ बच्चों के साथ में. I run a department there, जहाँ पे 6 और लोग काम करते मेरे साथ में, and I head the department. और मैं अपने बच्चों के साथ कई एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ to make them understand their SQ. I'm going to show you a little video of this child. मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. The video is of a 6th grade student suffering from an autoimmune illness for which she needed blood transfusion regularly. मसारू इमोटो का जो राइस एक्सपेरिमेंट है, आप सबने शायद देखा होगा मसारू इमोटो का राइस एक्सपेरिमेंट.
वो ट्रिक जो है या वो एक्सपेरिमेंट जो है मैंने इस बच्चे के साथ किया था. She started moving her IQ to cope better, and in time her EQ also got better. उसके जो रिश्ते थे with her parents got better, especially with her mother, and with herself it got better. She started understanding things that possibly even while explaining to her she could not follow with this experiment. And meanwhile, the purpose, her SQ, started to rise. So, for that matter, I want to share, she does not have to go through blood transfusions anymore. So I want to show how powerful these experiments with SQ are. So please listen to her. These are 2 jars which had boiled rice. One I have written hate on the top and one I have written love on the top. To the love one, I used to tell all the good things like you are very nice, you should preserve yourself, you are very good, like that. And to the hate one, I used to say you should die, you are useless, all those negative things. So within 3 days, the love rice remained as it is, but the hate rice became whitish yellow and had all liquids in it. And in 3 weeks now, the hate rice is something. It's all green with fungus all around, and love rice is still as it is. So as you can see, hate and love. So we get to know what power every word has. So while we are eating food, so when we think of good things, the food will benefit that much. If we think on negative things, bad things, so it will not benefit, but we may become sick and be unhealthy. So we get to know that the thoughts or the words that we think or get to hear, that is how it affects us. Like that only, even if you say bad things to a person, negative things to a person, that person may become sad or angry, which has a negative feeling in it. And if you say all loving and good things to that person becomes happy and creates more of an affectionate feeling to you. So this is how it's very important that we make children, because मुझे यही लगता है कि बड़े जब हम हो जाते हैं तो ज्यादा ध्यान हम इन चीजों के ऊपर नहीं देते, because we are so busy doing other things, earning money and managing your family and stuff like that. बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है. पर इन बच्चों के साथ हम अगर अभी से काम करना स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि IQ to EQ to SQ की जो हमारी जर्नी है, ये बहुत अच्छी तरह से we are able to understand. Now let me share with you the triangle of life. This has been taken from the ईशावास्य उपनिषद, जिसमें कि लिखा गया है कि what is birth and what is the real meaning of it. अगर हमें SQ की तरफ जाना है, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट बढ़ाना है, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि जन्म होता क्या है पहले तो, and what is the real meaning of being born. Now there are 3 important words here. One is janm, माने birth. Now janm जो है उसका root word है jan, which means coming forward or becoming known. That means that what was hidden from us, that was not appearing to us, is slowly beginning to appear before us. The second word to understand is utpatti, which is derived from the word pada, which means to rise above and appear, which is actually spiritual quotient. And the third word, which is important to understand, is srishti, which has the root word sri. What was has now come outside.
इसलिए वो famous जो saying है that we are spiritual beings having a physical experience is true. Our birth is not a chance event. Instead, we come from the unknown to the known, from the subtler to the gross. We exist before our physical birth. हमारा जन्म सिर्फ 9 महीने बाद नहीं होता, हमारा जन्म तो उससे पहले हो चुका होता है. So we enter this world with a high spiritual quotient and knowledge of the infinite. हमें सिर्फ अब वापस उसे remember करना है, याद करना है कि we are spiritual beings. So when we begin to ask the existential question, who we are and why we are here, our spiritual journey will begin. Now this brings us to understand sadhana, which is primary in developing one's spiritual quotient. A, जो यहाँ पे जो box लगा हुआ है, which indicates the inner being. Daniel Goleman ने already अपनी किताब में बोला हुआ है, inner work, inner being, जो हमारे उपनिषद में already कहा गया है. One is inner being. B is the physical being, the physical entity, हमारा physical body. And the nature of the physical body is what we need to understand, the IQ. And C is the practical life or the emotional being. हमें इस जीवन में जीने के लिए इमोशनली एंगेज करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, और किस तरह से इस EQ को हमें बढ़ाना है या इम्प्रूव करना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि unless we cooperatively, harmoniously cooperate all these three together, life is impossible. So मैं हमेशा कहती हूँ that we are in a search for the truth. हमें सत्य की खोज है. जब से हम यहाँ भूलोक में आए हैं, हमें सत्य की खोज है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या है, what is the reason why I'm here. And once you move towards that truth and you reach that आध्यात्मिक स्तर जिसको कहते हैं, then you will be home. हम सबको घर वापस जाना है, और इस घर वापस जाने के लिए हमें अपना spiritual quotient बढ़ाना पड़ेगा. Let's understand जीवात्मा and परमात्मा. We all understand that जीवा स्थूल है, और इस जीव जो है, ये हमारी आत्मा जो इस जीव में घूमती रहती है, इस फिजिकल बॉडी में, till it finds a purpose and it is searching for meaning. पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम कहते हैं परमा, PERMA बोलते हैं इसको. एंड व्हाट इज एक्चुअली, अगर हम देखें, P stands for purpose or some kind of positive emotion. E is for engagement. R is for relationship, because it is only through various different kind of relationships that we learn about ourselves. M is for meaning, and A is for accomplishment. So कहते हैं PERMA. Okay, so the Western psychology has given us this anagram, जिसको बोलते हैं PERMA. P for emotions which are considered positive, E for engagement, R for relationships, N for meaning, and A for accomplishments. अगर हम ये सब करते हैं तो हमारा SQ बढ़ता रहेगा. Okay, हमें पता है कि most of the times हमारी जीवात्मा जो है वो माया में लिपटी हुई है, इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाती जहां उसे पहुंचना है. The difference between जीवात्मा and परमात्मा is that आत्मा जो है वो सूक्ष्म है. It represents the whole. The whole has everything within and projects a part of it in the material world. This is called Maya. Man already has spiritual intelligence and a high SQ. Man has to discover it while living in this world. Man has to know Paramatma through his limited senses, so he has to do sadhana. इसलिए साधना बहुत ज़्यादा important माना जाता है. Now let's go to the SQ ladder. So what is the SQ ladder? How do we reach SQ, a high SQ? We start with survival love, प्रेम. आपको पता है कि प्रेम की भाषा ही है जो हमें भक्ति योग या भक्ति मार्ग पे लेकर जाएगी और ईश्वर से मिलाएगी.
पर इस प्रेम को कैसे डेवलप करना है। एसक्यू का मतलब क्या है? लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनफाइनाइट लव। पर हमारा जीवन कहाँ से शुरू होता है? सर्वाइवल लव से। हाउ एम आई गोइंग टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड? इसलिए मैं अपने माता पिता से प्यार करती हूँ, because they are the ones who are going to give me food, clothing. Then subjective love, I, me and myself. जब हम बहुत छोटे होते हैं तो we look in the mirror and we smile at ourselves and we love ourselves so much. Actually self love जो है ना, वो हमारे भीतर है पहले से ही। we are in love with ourselves. Then there is what we call जब थोड़ा when we grow up a little bit, we understand what we call object love. ये मेरी मम्मी है. Then there is possession love. तू मेरा ही है और किसी का हो ही नहीं सकता. So as you can see, from survival love, we get caught in this maya. इस माया जाल में हम फंसते जाते हैं. And then we come to the stage of possession. तू मेरा ही है और किसी का हो नहीं सकता. Jealousy, envy, all this begins. Anger, okay, attachment. और उसके बाद है self concern. After some time you realize कि भैया मैं तो I am caught in this trap. Let me think about myself. So आजकल जो है ना ये self love के बारे में workshops, because you are at the level of self concern. Suddenly आप हर इंसान को अपने से दूर करके अपने बारे में सोचने की कोशिश करना स्टार्ट करते हैं. That is called self concern. उसके बाद है awareness of love. भाई love होता क्या है? प्यार है क्या? Is प्यार all about only becoming attached to somebody and thinking that person can love me? Then your SQ is gone. Right? So the awareness of love comes in. What is love? Why am I here? Who am I? I am a loving person. I am this Jivatma who's connected to the Paramatma. मैं क्यों फंसती जा रही हूँ उन सब चीजों में? And then comes unconditional love, जिसको कहते हैं भक्ति मार्ग के ऊपर जब आप चलते हैं, डिवोशन आपके अंदर जब आता है ईश्वर की तरफ, तब एसक्यू डेवलप होता है. तो ये आपका लैडर है एसक्यू का. अब आप कहाँ है इस पर्टिकुलर लैडर में, वो आप सोच लीजिए. Where are you on this ladder? Are you still at the level of subjective love, I, me and myself? Are you at the stage of that kind of possession where you're getting affected by people because you have jealousy and envy for others or anger? Or are you really at the self-concern, at that self-love ladder, जहाँ पे आप अपने बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं? और अपने बारे में सोचना बुरी बात नहीं है. अपने बारे में सोचेंगे नहीं तो कैसे जाएंगे आगे? How will you develop the SQ? How will you reach the level of unconditional love? So the important thing is how to develop SQ. SQ को कैसे develop किया जाए, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा important है आज. Development of अंतकरण. हमारे अंदर जो अंतकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको develop करना है हमें. And that can only be developed by dispassion and discrimination, विवेक. इसके अंदर हमारे अंदर विवेक बुद्धि है. जब तक हम इस विवेक को डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को जान नहीं पाएंगे. अब कैसे करना इस चीज को, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सो मन और साधना. मन को काबू में लाना ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसके लिए साधना जरूरी है. राइट? प्रैक्टिस जरूरी है, प्रिपेयर्डनेस जरूरी है. There are two ways that people do it. One, withdraw mind from all objects and develop single pointedness. जैसे हम जब ध्यान करते हैं तो हम सिंगल पॉइंटेडनेस डेवलप करते हैं, चाहे वो जपा हो, तपा हो, जो भी है ना. You say a mantra or you do like one pointed vision, you possibly chant something like a बीज mantra, या फिर आप ध्यान करते हैं ब्रेथ के ऊपर, राइट, श्वास के ऊपर. So withdraw mind from all objects and develop single pointedness. ये हम कर सकते हैं, right? ध्यान की स्थिति, which is called meditation. और exclude all sense appetites and stand free of all objects. कहते हैं witnessing. एक है किसी चीज में इन्वॉल्व होना. जैसे जब आप जप करते हैं तो you become attached to that mantra.
हाँ, ये जब मैं मंत्र जप करती हूँ तब मैं ध्यान में रहती हूँ. दैट मीन्स यू आर अटैच टू दैट मंत्र, राइट? पर हमें तो डिटैच होना है, डिस्पैशनेट होना है. और डिस्पैशनेट होने के लिए you have to become witnessing consciousness, which is exclude all sense appetite. जितने भी आपके sense appetites है जो आपको दूसरों से जोड़े रखते हैं, चीजों से जोड़े रखते हैं, exclude everything and stand free of all objects. तब जाके शायद आप सही मानों में साधना कर सकते हैं. तो ये हमारे लिए जरूरी है. You can start with meditation. You can start with doing your, regular जो आप करते हैं, आप कर सकते हैं ये सब. बट एक समय आना चाहिए आपके जो ध्यान की स्थिति है जिसमें कि आप एक विटनेसिंग कॉन्शियसनेस बन के रहे और धीरे धीरे अपने सभी सेंस एपिटाइट्स को कम करना स्टार्ट करें. और कैसे करेंगे ये सब? हम हमारे ग्रंथों में इतना ब्यूटीफुल कहा गया है, द गुना सिस्टम. हमें बनना है गुणातीत. कैसे बनेंगे? दैट इज एक्चुअली द डेवलपमेंट ऑफ एसक्यू, राइट? सत्व गुण डेवलप करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा. और जिसका स्टार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज योरसेल्फ कि आपके अंदर तामसिकपन कितना है, राइट? इम्प्योर थॉट्स हो, इम्प्योर एक्शंस हो, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हो, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस हो, नेगेटिविटी, राइट? ये सब चीजें आप में है. हाँ, हम सब में है. हम सब में कहीं ना कहीं वो चीज है, राइट? वी कांट से हम सब में नहीं है. थोड़ा बहुत तामसिकपन हम सब में है. हाउ डू वी रीच सत्व गुण? यू यूज द गुण in the middle action as a bridge. So you are going to use the Rajas Gun as a bridge to move from tamas to sattva. Because action, personal passion, seeking approval of others, becoming a people pleaser, becoming perfect, ये जो हमारे अंदर के जो ईगो बिल्डिंग मैकेनिज्म्स है, इसको पहले पहचान और फिर धीरे धीरे लर्न टू ओवरकम दैट. तब जाकर आप सात्विक बन सकते हैं. और इन टाइम टू कम आप गुणातीत, माने विदाउट एनी ऑफ दीज गुना, डिटैच फ्रॉम ऑल गुना, आप अपने एसक्यू, हाईएस्ट स्पिरिचुअल जो आपका क्वोशंट है वो आप डेवलप कर सकते हैं. और इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने जरूरी. एक, व्हाई एम आई डूइंग दिस? जब भी आप कोई एक्शन करते हैं, आप अपने आप से पूछिए, व्हाई एम आई डूइंग दिस, विच विल गिव यू द इंटेंशन. एंड सेकंड, हाउ एम आई डूइंग दिस, विच विल गिव यू द एक्सप्रेशन. ये जानने के लिए कि आप एसक्यू डेवलपमेंट कहाँ है आपकी. Are you still tamasic? Are you still rajasic? Or are you beginning to become sattvic? इसके लिए ये 2 प्रश्न पूछने जरूरी है. एक, why am I doing this? Which will give you your intention. And how am I doing this? Which will give you the expression. इसी तरह से you will move from preyas lifestyle to shreyas lifestyle. माने preyas माने pleasure seeking lifestyle, to shreyas माने goodness, lifestyle of goodness. इस तरह से आप अपनी SQ को डेवलप कर सकते हैं. Very interesting saying which is taken, anybody can become angry. That is easy. But to become angry with the right person and to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way is not easy. Aristotle ने कहा था ये. If you understand this, what has been written here, becoming a gunatit is not difficult. This is how you develop the highest sattva quotient. मेरे हिसाब से spiritual quotient को replace करके sattva quotient हमें डालना चाहिए. Because spirituality, spiritual word जो है वो सत्व है. इसीलिए
सत्व क्वोशंट, आज के बाद स्पिरिचुअल क्वोशंट को डिलीट करते हैं और सत्व क्वोशंट, इसको हमें आगे लेकर जाना। सो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करेंगे? ईशावास्य उपनिषद से मैंने लिया है, तेन त्याग तेन भुंजिता। भोगी से योगी बनने का जो हमारा सफर है, भोगी कौन है? Slave of pleasures, immersed in sensuous pleasures, believes that is the purpose of life. Badi gaadi, bada ghar, sundar biwi, handsome husband, who wishes for a better heaven. I'll do so much of charity. इसको कहते हैं राजसिक चैरिटी, तामसिक चैरिटी। ओके, भगवद गीता में चैप्टर नंबर 18 में लिखा गया है कि चैरिटी भी तामसिक हो सकती है। अपने आप को बढ़ाने के लिए आप चैरिटी कर सकते हैं। And you wish for a better heaven, that is tamasic, भोगी ये करता है। And one who is lost in pleasure, ये सफर हमें योगी की तरफ ले जाना है। One who has mastered the pleasure, one for whom every pleasure is a means of higher achievement, one who gives up the wish for a better heaven, that is so beautiful, one who gives up a wish for a better heaven, है ही नहीं कोई desire बाकी, and one is untouched by the struggles and a conqueror of all pleasures. It's beautiful. So, इसको कहते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु, treating all living beings as one's own self. These four beautiful things have been given from the first 3 verses of the Ishavasya Upanishad, which is what? First, remembrance of God gives us power and strength. Remembrance of duty gives us progress in practical life. To remember that your body is perishable, inashwar hai, reminds us of the fleeting nature of all objects, and remembrance of death, attitude of detachment. We will have to develop Atma Buddhi. This happens when we raise our spiritual quotient or our sattvic quotient. So, thank you so much.